वेलकम टू 92.7 बिग एफएम। सर, सबसे पहले एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Yeah, myself Dr. Bharat Bhosale. I am a senior consultant medical oncologist and bone marrow transplant physician at Bombay Hospital, Jaslok Hospital in Mumbai. I am also working as a director for Sunrise Daycare chain. It's a chemotherapy daycare chain in Mumbai, Thane and Goa. All right, sir. So I have a keen interest in treating lung cancer, and recently I have done my fellowship in Zurich Hospital. This is during COVID. Okay. Only lung cancer. Okay. Sure, sir. So let's start with the interview, sir. So basically जो है, जैसे कि आप जानते हैं कि बिग एफएम जो है एक अवेयरनेस सब में स्प्रेड करना चाह रहा है। So इस लंग कैंसर के बारे में आपके क्या थॉट्स है? What do you think about this? आप क्या बताना चाहेंगे? Yeah. So basically, lung cancer and smoking are associated since long time. वेस्टर्न डेटा अगर देखते हैं तो लंग कैंसर का इंसिडेंस जो है वेस्टर्न कंट्री में बहुत ज्यादा है, क्योंकि स्मोकिंग का इंसिडेंस भी उनके पास बहुत ज्यादा था. नाउ इन इंडिया द स्मोकिंग परसेंटेज इज गोइंग अप, द लंग कैंसर परसेंटेज इज आल्सो गोइंग अप. इनफैक्ट वेस्टर्न कंट्रीज में लंग कैंसर का इंसिडेंस स्टेबल हो गया है. विद मोर अवेयरनेस, पीपल आर नो ऑप्टिंग हेल्दी लाइफस्टाइल, नो अवॉइडिंग द टॉक्सिक स्मोकिंग. There are no various health awareness and alternative treatment options are available to quit the tobacco and smoking. In India, in recent time, looking at even those who do not smoke, unko bhi cancer hone ke if you see, there are people who do not smoke in their entire life, still they develop lung cancer. तो ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि इसमें smoking is an important factor. Yes, smoking causes lung cancer. Majority of the cases are because of smoking. But there is something called as a second-hand smoke. So suppose you are with your friends and colleagues and relatives anybody in the family smokes, you are also getting exposed to a smoking. Even though you are not a smoker, still it increases your risk of getting lung cancer. Apart from this, Asian countries में जो pollution होता है, because of the fuel used for cooking in the peripheral areas, से चूल्हे से जो भी pollution निकलता है, plus metros में जो vehicles का pollution है, I think that is also no important risk factor for development of lung cancer उन लोगों के लिए जो smoking नहीं करते. Okay. So ये 50-50 है. Only smoking ऐसा नहीं है, तो smoking ना करने वाले भी are at high risk for lung cancer, and these are the reasons. Alright. तो सर, वो कहा जाता है ना कि इंडिया में एक प्रॉपर मेंटालिटी भी डेवलप हो चुकी है कि कैंसर की बात होती है या लंग कैंसर की बात होती है तो उसको एज अ बर्डन ट्रीट किया जाता है. तो आपके हिसाब से इज इट अ बर्डन और समथिंग एल्स? सी, पहले क्या होता था कि कैंसर एंड डेथ दिस इज लॉन्ग बैक, नॉट नाउ. साइंस बहुत आगे आ चुका है. पहले लोगों को लगता था कैंसर हो गया मतलब डेथ होने वाली है एंड इट इज इमिनेंट. ऐसा नहीं है. If you look, there are deadly cancers जहाँ पे बहुत ही महंगी ट्रीटमेंट करनी पड़ती थी. उसका ट्रीटमेंट खाली एक टैबलेट से हो रहा है. इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण एक CML करके ब्लड कैंसर होता है. उसमें 2000 के पहले हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही करते थे, और उस कैंसर को आज एक टैबलेट देके, सिंपली टैबलेट देके पूरा क्योर कर सकते हैं. नॉट ऑल द पेशेंट, बट 60 to 70%. दिस अ बिग अचीवमेंट. देन सेम थिंग इन ब्रेस्ट कैंसर, सेम थिंग इन नाउ इन लंग कैंसर. 10 साल पहले, बहुत पीछे नहीं, 10 साल पहले लंग कैंसर का मरीज अगर हमारे पास आता था, हार्डली देयर यूज्ड टू बी अ ट्रीटमेंट ऑप्शंस. मतलब उसके टाइप के डिपेंड. कीमोथेरेपी 10 साल पहले का पहला एडवांटेज था, मतलब एडवांसमेंट, कि आप लंग कैंसर को अलग अलग हिस्टोलॉजी में डिवाइड करो एंड देन ट्रीट देम, देन यू सी बेटर आउटकम. उसके बाद इस लास्ट 10 years में इन लंग कैंसर देयर इज सो मच ऑफ रिवॉल्यूशन. There is something called as a targeted therapy which hits a particular target or mutation in lung cancer. There is something called as the immunotherapy, which is the latest treatment available in lung cancer. और ये दोनों ट्रीटमेंट की वजह से जिस कैंसर का, स्पेशली लंग कैंसर का सर्वाइवल 5 साल तक हार्डली few percent of the patient used to live. Now we are seeing more than 30 or 40% of the patients are living beyond 5 years. I will tell you, patients with lung cancer and brain metastasis are also living beyond 5 years because there is a specific targeted treatment available. You just have to make sure that you have done proper investigation of a lung cancer patient. From the tissue, you have done the genomic analysis. There is something called as genomic analysis and get those particular mutations. So not all lung cancer patients are treated in the same way. You have to fractionate them into A, B, C, D, and whichever mutation or that immunotherapy marker is positive, you treat them with that treatment. And
we are seeing patients with even stage 4 with brain metastasis are living for years, which was not possible 10 years back. Okay. So according to you, sir, what are the risk factors of lung cancer? See, in lung cancer, the first risk factor is smoking. So if somebody is smoking, definitely he is at a risk, and he or she should reduce the smoking or must try and to quit the tobacco. But apart from smoking, as I told you, there are non-smokers also develop lung cancer. Then that is very big concern for us. So उसमें हम कोशिश कर सकते हैं पोल्यूशन जो होता है मेट्रोज में, जैसे कि व्हीकल पोल्यूशन है बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है मेट्रोज में, इंडियन मेट्रोज में, और पेरीफेरी में जो चूल्हा जलता है, द अदर फॉर्म्स ऑफ टोबैको और कंज्यूम्ड, this is like a second hand smoking. You are also exposed to people, somebody else is smoking, but you are staying with them for hours, and then you are also naturally getting exposed to that smoke. So these are other risk factors. Apart from this, there are subset of patients who will give you the history of cancer in the family, but that fraction is hardly 5%. So family history is also important. Whenever we see a patient, we check on something, a history in the family of other cancers or lung cancer. So those are small numbers, but yes, the family history is also important. Okay. And apart from that, there are some occupational hazards where people are exposed to toxins like asbestos, which is used in sheets used for sealing. So if somebody is working without protection in such industries where the exposure to asbestos is more or prolonged, there is a lung cancer called as mesothelioma, which is categorically because of this asbestos. ओके तो लंग कैंसर की सबसे डेंजरस बात ये होती है कि ये लास्ट स्टेज में डिटेक्ट किया जाता है, तो इसके लिए रेगुलर स्क्रीनिंग टेस्ट भी इम्पोर्टेंट है. तो लंग कैंसर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बीइंग एन इंटरनल ऑर्गन, लंग कैंसर के सिम्टम्स जो लक्षण बोलते हैं हम, जब लक्षण शुरू हो जाते हैं तो वो एडवांस स्टेज में ही आता है अनफॉर्चुनेटली. और उसके जो लक्षण है वो ऐसे हैं कि खांसी, चेस्ट पे, और कभी कभी खांसी में रेयरली खून आना. अब प्रॉब्लम है कि इंडिया में बाकी सारे इन्फेक्शन जैसे कि पोल्यूशन की वजह से होने वाला ब्रोंकाइटिस हो या सीओपीडी हो या ट्यूबरक्लोसिस हो, उसमें भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं. सो कभी कभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कभी डिले होता है वो, बट नेचुरली बिकॉज एवरीबॉडी विल नॉट थिंक कि इसको कैंसर ही है, बिकॉज यू हैव टू थिंक ऑफ मोर कॉमन डिसीजेस फर्स्ट. बट द वे लंग कैंसर के नंबर्स बढ़ रहे हैं, एवरी क्लिनिशियन, इनफैक्ट एवरी डॉक्टर हैज टू कीप दिस इन माइंड कि ये सिम्टम्स अगर रिलीफ नहीं मिल रहे यूजिंग द नॉर्मल एंटीबायोटिक और व्हाटएवर ट्रीटमेंट, बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर दैट, देन दे शुड आल्सो थिंक कि ये भी एंगल हो सकता है. और जैसे कि मैंने बताया कि स्क्रीनिंग, आपने पूछा कि स्क्रीनिंग कर सकते हैं क्या, कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए नॉर्मल स्क्रीनिंग पॉसिबल है कि बिकॉज इट्स एक्सटर्नल ऑर्गन, यू कैन डेली डू योर स्क्रीनिंग. बट लंग कैंसर में ऐसा नहीं है ना, लंग इज अ इंटरनल ऑर्गन, यू डोंट हैव डेली क्लिनिकल एग्जामिनेशन फॉर दिस. यस, बट देयर आर स्टडीज व्हिच आर नॉट फ्रॉम इंडिया, अब्रॉड में इसके बारे में स्टडी हो चुके हैं, अमेरिकन कंट्रीज में हुए हैं, यूरोपियन कंट्रीज में हुए. इनफैक्ट मैं उन लोगों से मिला जिन्होंने ये स्टडीज की है. तो व्हाट दे हैव शोन, स्पेशली इफ यू हैव अ टारगेटेड पॉपुलेशन जिनमें स्मोकिंग होता है, वो स्मोकर्स में आप अगर रेगुलर इंटरवल पे सीटी स्कैन, उसको लो डोज सीटी स्कैन बोलते हैं, जिसमें रेडिएशन एक्सपोजर भी बहुत कम होता है, वो लो डोज सीटी स्कैन करने से हमें ऑलमोस्ट अर्ली स्टेज में कैंसर के पेशेंट्स पकड़ में आ सकते हैं और उससे डेथ होने के चांसेस 20% रिड्यूस हो सकते हैं. बट अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज आर एडवांस कंट्रीज, दे हैव दोस एक्सपर्टीज, देयर पॉपुलेशन इज अंडर कंट्रोल. We have a huge population, so I can't apply anything which is studied in the Western population in my country. So I think rather than going for screening, prevention is the best. Right. As I said, we have non-smokers developing lung cancer. Then targeting each and everyone who is smoking and non-smoking is going to be a very big challenge for us. But yes, if somebody wants to do a screening, there are tests available, which is called as a low-dose CT scans, which can be prescribed by the expert oncologist or pulmonologist. And somebody who is at a risk definitely can be screened, and that death can be avoided, and it's just scientifically proven. ओके तो सर इंडिया में ना आज भी लोग कैंसर का नाम सुनते हैं तो बहुत डर जाते हैं, और अगर देखा जाए तो 40% केसेस कैंसर के ही मिलते हैं इंडिया में. तो आपको क्या लगता है कि ये जो है न्यू नॉर्मल की तरफ हम बढ़ रहे हैं? सी, इफ यू आर आस्किंग आप कोविड के बाद का बात कर रहे हो, तो यस, कोविड से क्या हुआ है कि लोगों में हेल्थ अवेयरनेस बहुत आ चुका है. इन द कोविड टाइम्स ऐसा था कि एक जमाने में हर एक का सीटी स्कैन होता था, और मेरे पास तो इतने सारे केसेस आए कि पेशेंट को सिम्टम्स नहीं थे, बट सीटी स्कैन करने के लिए गए कोविड के, एंड लंग कैंसर पिकअप हो गया.
सो इट इज समवेयर सिमिलर टू, जैसे मैंने स्क्रीनिंग का बताया कि इस कम्युनिटी में आपने सीटी कराया तो ये अपने पकड़ में आ गए। बट होता क्या है कि हर कोई जो नोड्यूल दिखेगा आपको लंग के सीटी स्कैन में वो लंग कैंसर ही होगा, इसका ना गारंटी नहीं होता है। और तो मैंने जैसे बताया कि इंडियन कंट्री में यू शुड हैव एक्सपर्टी अवेलेबल एट ऑल लेवल्स। बाय डूइंग अ सीटी स्कैन यू विल जस्ट इंक्रीज, एंजाइटी बढ़ेगी कि ये क्या है। अब उसको बायोप्सी करके राइट लैब में भेज के अच्छी जगह से, सो डायग्नोसिस देना कैंसर का एक छोटी बात नहीं है। यू आर टेलिंग अ पेशेंट यू हैव अ कैंसर, इट्स अ बिग बिग न्यूज फॉर द पेशेंट। तो वो एक्सपर्टी अगर अवेलेबल है तो यस नो। इसके बाद जो कोविड में हम देख रहे हैं कि ये सीटी स्कैन की वजह से काफी लोगों का डायग्नोसिस अर्ली स्टेज में हुआ, तो सर्जरी भी हुआ उनका। और स्क्रीनिंग का एम रहता है कि आप कैंसर को पहले स्टेज में डिटेक्ट करो जहां पे आपका क्योर रेट 90% तक जाता है। और एज वी डिस्कस कि सिम्टम जब आते हैं तो वो थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज में चला जाता है, तब क्योर करने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। हेल्थ अवेयरनेस डेफिनेटली हुआ है कोविड के बाद। लोग पीपल आर मोर अवेयर फॉर ऑल द थिंग्स, दे वांट टू गो टू द डॉक्टर एंड इट्स अ गुड थिंग दैट फैसिलिटीज आर अवेलेबल एट 2 tier 3 tier cities also. ओके सो वन लास्ट क्वेश्चन, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यंगस्टर्स के लिए आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे, क्योंकि आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो पीयर प्रेशर में आके स्मोकिंग शुरू कर देते हैं एंड दे डोंट रियलाइज इट कि उनके हेल्थ के लिए बहुत इंजूरियस है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? Yeah, we don't want to blame the youngsters. They are doing good things also. I see youngsters going for cycling, youngsters going for marathons, with the obviously with the parents and ये तो देखो क्या है कि इन्फ्लुएंस सब हो जाते हैं लोग। तो कोई अच्छे गुड थॉट से इन्फ्लुएंस होता है, कोई बैड थॉट से इन्फ्लुएंस होता है। Now everybody has to understand. The important message I always talk with youngsters that God has given us the beautiful body. We always try to keep ourselves inside, outside, in a way to maintain that what God gives to us. आप जो भी चीज करिए सोच समझ कर कीजिए। लंग कैंसर का स्मोकिंग से तो डायरेक्ट कनेक्शन है। जैसे डायरेक्ट मतलब जो आप स्मोकिंग करते हो तो, और आप कोई फ्रेंड के साथ हो और वो स्मोकिंग करता है तो भी आपको प्रॉब्लम है। सो ना केवल आपको स्मोकिंग से दूर रहना बल्कि आपके फ्रेंड्स को भी दूर रखना है। बिकॉज majority of the lung cancers, 80% of the lung cancers are getting detected in last stages, third or fourth stage, unfortunately. Okay. Right. Very few, less than 20% are detected in stage 1 where the cure rate is 90%. Still there is a risk of recurrence. So ye a sort of the death sentence ho jata hai. Even though there are newer therapies, you will take those therapies, you will live for 5 years, but then again there is no chance of cure. There is always you are chasing the cure. So if you ask me what is the best way to treat lung cancer is to stay away from any sort of smoking. There is no alternative safer thing for cigarettes, because there are new things called as e-cigarettes, hookahs. These are new things because people have started doing this now. So we don't know what is going to happen in over a period of next 20 years or 30 years. Obviously one can choose the food, but it has to be a balanced food. But obesity is the most important factor which causes many types of cancer. And once anybody develops cancer, all these factors cause problem with the treatment. The treatment which is going to be effective may not cause that much effect if person is obese, if person is not exercising, if the patient is not having healthy diet. So prevention is the better. ये पहले से हम बोलते हैं वो ये lung cancer के लिए it is very very important. I think अभी जैसे मेट्रो में आप और मैं जैसे मेट्रो में रहते हैं, तो the mask which we use to prevent ourselves from getting infection of COVID, अगर आप कोई बाहर जाते तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि 3 रुपए छोटा सा मास्क पोल्यूशन की जगह पहनते तो वो भी हमारी रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू द पोल्यूशन कम करेगा. इफ यू सी द एशियन पीपल्स फ्रॉम द जापान और दैट साइड, यू विल सी दोस पीपल वेयरिंग मास्क लॉन्ग बिफोर कोविड. आपने अगर ऑब्जर्व किया है, so this is the important. We should avoid the second hand smoke as well as exposure to the pollution. That also significantly reduces the risk. जो lung cancer का risk है बहुत बहुत मात्रा में कम हो सकता है. Thank you so much, sir, and it was lovely talking to you. Have a nice day, sir. Bye bye. Thank you. Bye. Thank you, sir. Bye.